on and temperature is exceeding almost 40 degrees Celsius. So it has never been happened earlier or before. नवंबर दिसंबर पुराने वक्तों में ठंडे होते थे वो गर्म हो गए पिछले 20 सालों में और मार्च अप्रैल जो था उसका टेम्परेचर कूल हो गया था लेकिन अब ये सडन जो शिफ्ट आई है दिस इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी. Then scenario of meat production in Pakistan being staple food. So I would like to express some basic elements of the weather which are really threatening our staple food or wheat. Then change in temperature and wheat growth period in Pakistan. So a case study we will try to discuss what we did using cloth simulation models. And results will also be shared with you. At the end, we will discuss about some conclusion. Next. You know that globally, the food security means availability of food to all the persons on cheaper rates, having full nutritional quality. In terms of proteins, in terms of vitamins or minerals or carbohydrates or lipid even. So climate is really bringing change in the health of the crop plant. Once you plant seed, it passes through many growth phases and these are collectively called as the developmental stages of the crop plant. So these are direct under the control of thermal time and photothermal time. If crop is photosensitive. Then on daily basis the increase in plant size, weight or volume, you may call its growth. It's under the control of intercepted solar radiation. Once the plant is receiving some energy, means 5 megajoule in a day. So if efficiency is almost 1 mega, 5 grams per square meter per day, dry matter will be harvested by the plant. In South Asia, if temperature 1 degree rise means the present temperature, the upper limit, the lower limit, average temperature or mean temperature. So there will be decrease of cereal production 4% almost by 2030. So Pakistan is particularly vulnerable to climate change at number 3. Almost if you have gone through the NASA reports published by the last year, by the end of last year, बताया गया था पाकिस्तान पहले नंबर पे है vulnerable. कंट्रीब्यूटर 108वें नंबर पे, vulnerable पहले नंबर पे. चले हम उसको तीसरे पे कंसीडर करते हैं after Sudan and Ethiopia. So developing countries have low capability to mitigate impacts and high vulnerability both financially and technologically. We don't have technology much more, and financially less we are having from our research side to be funded into the development of new horizons. Next. Okay. Lot of indicators, but we discussed the climate indicator 3, greenhouse gas concentration rising, and as a result of that, temperature is rising, and thirdly, the erratic rainfall. The areas of Punjab are more than 67% under arid, and having low rainfall, every 100 millimeter. And the secondly, the largest area is the semi-arid, 64% almost. So 100 to 200 millimeter of rainfall is achieved, which is quite low than the requirement of any crop. Next. Next, please. Okay, examples of climate change impact. Almost 3 billion people will experience the water scarcity by the end of this century. Almost the water has gone down
100 feet in different areas. If you talk about the amount of water obtained through rainfall, by the end of 1990, almost 12 to 13 million acre foot water was received throughout the year through rainfall. So that has gone down to 1 to 2 million acre foot every. So because of climate change. Then crop revenue, surely it will fall by 90% by the end of 21st century in South Asia. So the major food, they will not having much more share towards the economy of not towards 20 to 30% of species will be at risk once temperature will be mean temperature 1.5 to 2.5 degrees Celsius. Next. These are the global mean surface temperature might increase 3.7 to 4.8 degrees centigrade over 21st century. This is the greenhouse gas. These are the years on the x-axis. These are showing, these are RCPs, RCP 2.6, 4.5, 6 and then 8.5. Mean if radioactive forcing or the energy content per square meter will increase at 2.5, then what will happen? So as the radioactive forcing are increasing, it means the greenhouse gases, the concentration of these gases also increasing. As a result of that, temperature is increasing. Next. You know that if you talk about the wheat production in Pakistan, that is not stable. Because we don't have ideal plants or keto type plants as advised by the donors. He started working in 1958 till 73. Lot of paper available. You may Google, you will get. Go through that. Try to, on the part of breeder, request, try to involve new cultivar or erectophile. Means having erect leaves 10 to 32 angle between the main stem and the leaf sheath. हमारा 40 या 40 से ज़्यादा एंगल है वो ड्रूप भी बन जाती हैं, प्लानोफाइल हो जाती हैं और ओवर शेप करने से नीचे वाले पत्ते जल्दी पीले हो जाते हैं और वो अपनी खुराक तैयार नहीं करते, खुराक तैयार करने की बजाय वो उल्टा रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। इतनी वेरिएशन है वीट में, किसी साल 0.19 मिलियन हेक्टेयर और फिर पंजाब में 0.3 और 0.98, lot of variation. So we have to be on sustainable basis. 1 year we are getting 1 million ton, for example. Next year we should get 1 plus, not less than that. High climate variation will decline wheat productivity by 10% in 2030. These are the reports of top simulation model. Lot of gap between the actual and potential yield. So potential, once you call it potential, means under non-limiting condition of irrigation and nutrient. So only limiting parameter will be climate. So you have to work with that. Next. Then what we did, we used 32 climate models to downscale our data, means to bring future into present. What will happen in 2023, 24, 5, 19. So we have gone through this using these climate models. If the you know that these are RCPs. So Dr. Sharp also explained the RCPs, the representative concentration pathways. पहले जो सिनेरियो बने थे ये असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी की जो पहली चार थी वो बनी A2 और B2 सिनेरियो से। वो वक्त के साथ साथ दोनों बता रहे थे कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, रेनफॉल भी चेंज होगी, प्लस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ेगी और आपकी एग्रीकल्चर को कितना थ्रेट होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऑब्सलीट हो गए 2014-15 के बाद। तो नए सिनेरियो उन्होंने बताए कि आरसीपीज को यूज किया जाए
और 2.6 पे वाट्स पर स्क्वायर मीटर एनर्जी स्टेटस, देन 4.5, 6 और 8.5। ये सारे ये क्लाइमेट मॉडल्स हैं। इनको जब डेटा डाउन स्केल करते हैं तो वो कह रहा है CO2 की कंसंट्रेशन भी फ्यूचर में बढ़ेगी, लेकिन 2.6 के साथ 490 बढ़ेगी ppm, और एज the radioactive forcing are increasing correspondingly from 2 to 8, so corresponding increase in CO2 concentration 1370 हो जाएगी by the end of this century, नए मॉडल जो बता रहे हैं। और as a result of that आपका mean temperature at पे 4.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, very alarming। Next, हमने अब ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, ये ज़्यादा इसका नुकसान है कि CO2 की कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर सेक्टर कितनी मिलियन टन हर साल कर रहा है। 94 में बहुत कम थी और 2050 में ये 1395 हो जाएगी। अलार्मिंग कि उसको कैसे रेक्टिफाई। नेक्स्ट, ये है जी कि अगर हम मॉडल को रन करें बेसलाइन के साथ, प्रेजेंट बेसलाइन मीन आपके पास यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डेटा फ्रॉम 1980 टू 2010 एज advised by the NASA. So once we run the model, we get production for any region with baseline. So almost 146 days you talk about the growing season length of the crop, growing season length. As the temperature is increasing from 1 to 5, so the number of days are curtailed. So this is again alarming. Once number of days are curtailed, are taken less by the crop plant, what will happen? मैं अगर आपको कहूँ कि आपका कल मैं एक चैप्टर का इम्तिहान लूँगा, तो उसकी बजाय मैं आपको एक हफ्ता टाइम दे दूँ, so it will take एक हफ्ता 7 days will help you to learn more about that as compared to the less time given to you. तो इसी तरह क्रॉप को अगर कम टाइम मिलेगा तो वो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। जी ये है जी आपकी प्रोडक्ट, ये जो है एरिया ऑलमोस्ट सेम पाकिस्तान का शुरू करेंगे तो कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें आई हुई है, और आपकी प्रोडक्शन जो है वो राइज होके कोई नीचे आ गई और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है ना वो आपकी बढ़ रही है। सो दिस मस्ट बी मैच्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, again these are the some simulation values, change in temperature and length of growth, wheat growth period in Pakistan. So here is the wheat yield, and this is run with the baseline 2020, 50 and 2080. So this will get benefit in future. Northern mountainous region because of high rainfall. Other are decreasing trend in yield is seen in southern semi-arid plant and northern submountainous and southern arid plant. So we have to chart out our plan as far as equipment plants are concerned. So those must be specific to the zones. Next, a case study. Next, ओके, हमने वीट के ऊपर काम किया और सियालकोट में 4 डिस्ट्रिक्ट मसरूर, नारोवाल और 3 और हमने इसका we worked with that and we were having different phases. Phase 1. Okay. Phase 1, what we did, we got the data from the farmer field. Farmer field. अच्छा, ये वाले स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंसेस की
Okay. Data collection, weather data 1980 to 2018 and wheat cultivar were used and soil quality parameters were also taken into consideration. Phase 2, farm level data collected, and phase 3, experimental study of wheat cultivar under different nitrogen treatments as used by the farmer, zero fertilizers and 50, then 100, 150 and 200. Phase 4, preparation of model input files like file A, then management file, then treatment file, soil file, and weather file along with soil. Model was calibrated under at farmer field level and then run within phase 5. First of all, model was run with baseline 1980 to 2012 then, and then for mid-century 2040 to 2069 and for end century 2070 to 2099 as described by the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. So this century has been categorized into 3. Early century starting from 2010 to 2039 and 2040 to 69 mid-century and 2070 to 2099 the end century. So we have worked with the mid and end century using RCP 4.5 and 8.5. Both are aggressive model. RCP 4.5. So they are indicating that temperature will surely rise, greenhouse gases will rise, there will be changing pattern in the rainfall. But RCP 8.5 they are dictating that temperature will be almost double, 4.8 degrees Celsius by the end of this century. The mean temperature एटमॉस्फेयर के मीन टेम्परेचर में इंक्रीज होगी और ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ के 100 ppm से CO2 की कंसंट्रेशन चली जाएगी और रेनफॉल जिन इलाकों में ज़्यादा हो रही है उनमें बढ़ जाएगी, जिनमें कम है लाइक फैसलाबाद शामा ये उनमें मज़ीद कम हो जाएगी। जी नेक्स्ट next clip. Okay. Different questions were evolved for the two cultivar Faisalabad 2008 and 2006. So these are the P1, B, and these actually control the phenology of the crop. Next चलें. Okay जी ये हमने यूज किए सिनेरियोस 4.5 और मिड सेंचुरी के लिए 499 ppm पे 8.5 571 and RCP 4.5 532 ppm ये बताए क्लाइमेट मॉडल ने कि इतनी CO2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी और RCP 8.5 एंड सेंचुरी के लिए 801 ppm हो जाएगी। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट चलें और ओके ये बेसलाइन के साथ अगर आपने रन किया तो पिछला 85 से 20 तक का देखिए तो मैक्सिमम टेम्परेचर में राइज हो रही है और टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन भी वो शो कर रहा है कि वो कम हो रही है। मिनिमम टेम्परेचर भी राइजिंग ट्रेंड है। जी नेक्स्ट ओके दिस इज द बेसलाइन रिजल्ट और आज ये जो है 4.5 और ये पहली जो है बेसलाइन है पहली लाइन ये वाली ये सारी ये और ये 11 मॉडल हमने चुने और वो बता रहे हैं कि सारे मॉडल बता रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर बेसलाइन से बढ़ रहा है और आरसीपी मिड सेंचुरी के लिए भी और एंड सेंचुरी के लिए वो चल नहीं गया। दिस इज बेसलाइन एंड दीज आर द 11 मॉडल्स। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर मिड सेंचुरी rising and for also the end century again rising trend is seen. Next. Okay, the variation in total annual rainfall. Again, this is run with the baseline and these are the what we did. हमने पिछले 30 सालों का डेटा लेके तो पूल वेट इकट्ठे कर लिए कितने दिन बारिश हुई
कूल ड्राई कर लिए, ड्राई वेट कर लिए, और 5 या 6 कैटेगराइज की हमने उसकी। उनके साथ हमने मॉडल रन किए, तो वो इसके रिजल्ट कुछ ये आए, और बेस लाइन से सारे तकरीबन ऑलमोस्ट कोई एक आध ही मॉडल कह रहा है कि वो रेनफॉल बढ़ेगी, बाकी जो है वो कह रहे हैं कि रेनफॉल स्टैटिक रहेगी या उससे कम होगी। नेक्स्ट। ओके जी, अब हमने इन क्लाइमेट मॉडल को यूज करते हुए व्हाट वी डिड, मॉडल रन किया डीसेट, और उसके साथ अपनी यील्ड ली, फार्मर लेवल की यील्ड 1980 से लेके 2010 तक कितनी थी बेसलाइन के साथ, और फॉर आरसीपी 4.5 मिड सेंचुरी, आरसीपी 4.5 एंड सेंचुरी, क्या बना इनके साथ यील्ड का। तो श्योरली टेम्परेचर राइज कर रहा है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, और रेनफॉल भी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीजिंग ट्रेंड आप देख रहे हैं। कुछ मॉडल कह रहे हैं कि यील्ड कम होगी, और 3-4 मॉडल कह रहे हैं कि नहीं यील्ड फ्यूचर में बढ़ेगी। तो फ्यूचर में यील्ड बढ़ने की रीजन क्या है कि सियालकोट में जो 4 हमने तहसील हुई थी, उनमें 2 तहसीलों के अंदर वो वेट डेज ज्यादा आ रहे हैं, वेट डेज आर मोर as compared to the dry days, so plant will get benefit out of those wet places. Next, again फैसलाबाद में 2008 की और आरसीपी 4.1, और ये सारी वो बता रहा है कि जी नारोवाल, चुंबड़ियाल और सियालकोट और कसूर, तो ट्रेंड देख लिया इन सब में। ये कह रहा है पैदावार बढ़ रही है, 2 मॉडल कह रहे हैं कम हो रही है। चुंबड़ियाल में बिल्कुल ऑलमोस्ट बेसलाइन के साथ है, और इसमें अगेन कसूर में वेरिएशन है, some model that yield will increase. ओके, कंक्लूजन ये है कि बेसलाइन के साथ जब आप रन कर रहे हैं और उसके बाद क्लाइमेट मॉडल को यूज करते हुए अर्ली सेंचुरी और मिड सेंचुरी फॉर 4.5 फॉर 8.5, so yield, some model they are telling us that yield will decrease, some models are telling that yield will increase, but where number of wet days will be more. कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ ऐसे एरियाज में जहां बारिश पड़ेगी, साथ क्रॉप विल गेट बेनिफिट। एनी क्वेश्चन?